अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Relative refractive index and absolute refractive index. The difference between the absolute refractive index and a relative refractive index is simple. Absolute refractive index or simply refractive index is the ratio of the speed of light in vacuum to the speed of light in that medium. This is absolute refractive index or relative refractive index. However, absolute refractive index or simple refractive index. Relative refractive index is when light goes from one medium to another, one medium to second medium, like this. This is the incident, this is the normal, it bends. When it goes from medium 1 to medium 2, so refractive index of 2 with respect to 1, refractive index of medium 2 with respect to medium 1, it is called relative refractive index, and it is written as mu21, and it is read as refractive index of 2 with respect to 1. So refractive index of 2 this 1 is equal to mu2 refractive index of medium 2 divided by refractive index of medium 1. That comes equal to जो हमने कल पढ़ा था V1 divided by V2. So कल हमने निकाला था refractive index of glass with respect to water, वो निकला था 9 divided by 8. Similarly इसका reciprocal refractive index of water with respect to glass is 8 divided by 9. So refractive index जो है relative refractive index और relative refractive index ये जानना बहुत ज़रूरी है in order to learn about the refraction, laws of refraction. Okay, now today's topic is cause of refraction. जब हमने definition refraction पढ़ा था, इसकी definition पढ़ी थी, हमने इसमें पढ़ा था when light falls on the separation of this interface which separated the medium 2 and medium 1, but the line is incident obliquely on this interface. It bends when it enters the medium 2. This bending is called a refraction. So why is bending takes place? ये हमें पता चलता है refractive index, यानी 1 and 2 these media are different, their refractive index is different, that's why it bends. That's why this light bends. अब फिर हमने यहाँ ली थी incident area, हमने perpendicular ली थी, perpendicular in which falls on this interface perpendicularly. वहाँ bending नहीं होती थी, bending ये हमने पढ़ा था, bending नहीं होती है यहाँ, ठीक. इसका मतलब जो ये definition है that is not complete, ये भी हमने पढ़ा था. वो फिर कैसे हम define कर सकते हैं? Actually जो medium 1 and medium 2 हैं, they have different properties. Speed of light in medium 1 is different to that of speed of light in medium 2. So when it goes from medium 1 to medium 2, speed of light changes. That is why हम इसको define भी कर सकते हैं. Change in the speed of light takes place when the light goes from one medium to another. And this is the basic cause of refraction. The basic cause of refraction. What is basic cause of refraction? The basic cause of refraction is that change in the speed of light takes place. Change in the speed or velocity of light takes place. Speed of light takes place when the light goes from medium 1 to medium 2. So this is the cause of refraction. Medium 1 and medium 2, they have different properties, optical densities. Speed of light is different in medium 1 and speed of light is different to that of 2. Medium 1 and medium 2 speed of light is different to that of speed of light in medium 2.
and when the light goes from medium 1 to medium 2, change in the speed of light takes place, and that is why it bends when it falls obliquely on this interface. So this is the basic cause of refraction. The basic cause of refraction is that change in the speed of light takes place when it goes from medium 1 to medium 2. Suppose अगर medium लेंगे, air लेंगे, this is the air, medium 1 is air, medium 2 is suppose water, or गिलास लेंगे, गिलास, ठीक. Speed of when a ray of light is traveling in air and enters this glass, speed of light decreases. When so bending of light or refraction takes place at this interface of air and glass. Similarly, when the ray of light travels from glass to air like this, glass, medium 1 is glass, medium 2 is air, the speed of light increases. यहाँ से यहाँ increase होगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट एयर में ज़्यादा होती है, यहाँ कम होती है, यहाँ इंक्रीज़ होगी, ये भी यहाँ भी बेंड हो गई है, जो देयरफॉर बेंडिंग ऑफ लाइट और जो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट इंटरफेस ऑफ ग्लास एंड एयर. फर्दर ये भी हमें याद रखना है, जो एंगल ऑफ बेंडिंग, चाहे बेंड या ज़्यादा होगी या कम होगी, वो इस पर यह भी डिपेंड होता है किस पे, डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन स्पीड्स. अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा, बैंड ज़्यादा होगी. अगर डिफरेंस ऑफ द स्पीड्स ऑफ लाइट इन टू मीडिया कम होगी, तो बेंडिंग ऑफ लाइट भी कम होगी. सपोज अगर हम लेंगे आयर एंड वाटर, दूसरे केस में लेंगे आयर एंड गिलास. आयर एंड गिलास में ज़्यादा जो है डिफरेंस है, वेलोसिटी की डिफरेंस है, इसमें 3 × 10⁸, इसमें है 2 × 10⁸. सो डिफरेंस इज़ 1 × 10⁸. अगर ये लेंगे हम, इसमें 3 × 10⁸, इसमें है 2.25, इज़ लेस देन 1, यहाँ डिफरेंस है लेस देन 1. सो यहाँ जो आयर गिलास लेंगे हम, आयर गिलास या गिलास आयर, इसमें ज़्यादा बेंडिंग होगी एज़ कम्पेयर्ड इन दिस पेयर ऑफ मीडिया आयर एंड वाटर. सो बेंडिंग भी किस पे डिपेंड है, डिफरेंस इन द स्पीड्स ऑफ लाइट इन टू मीडिया. जब लार्जर डिफरेंस होगी स्पीड्स ऑफ लाइट की, ग्रेटर विल बी द एंगल ऑफ बेंडिंग एंड वाइस वर्सा. लार्जर द डिफरेंस इन स्पीड्स, greater will be the angle of bending, and vice versa. जी, this is the cause of refraction. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ नेक्स्ट जो इस टॉपिक का पार्ट है, हमने लिए इस वीडियो का पार्ट है, दैट इज़ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. सो देयर आर 3 laws of refraction. Following are 3 laws of refraction. Number first, याद रखना है, whenever light goes from one medium to another, frequency of light does not change. जो frequency है light की, it does not change. However, velocity of light changes, जो हमने अभी पढ़ा था, speed of light changes, velocity of light changes, as well as wavelength of light changes. So first law is whenever light goes from one medium to another, frequency does not change. Frequency of light does not change. However, velocity of light changes. Velocity and wavelength of light changes. Wavelength जो है उसको हमको बोलते हैं कलर ऑफ लाइट, क्योंकि जो वेवलेंथ है, कलर जो है, कलर इसको हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ. जब रेड कलर की यह वेवलेंथ है, वायलेट कलर की ये वेवलेंथ है, ठीक. वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस. इसमें वेलोसिटी अगर यहाँ से यहाँ होगी, यहाँ लाइट जाएगी यहाँ से यहाँ तक, वेलोसिटी चेंज होगी, एज वेल एज वेवलेंथ ऑफ लाइट आल्सो चेंज. वेवलेंथ इज द length of one complete wave, that is called a wave length, which is denoted by lambda. So we know that they are related to each other, frequency, velocity, and they are related to each other. V is equal to nu lambda. V is equal to nu lambda. So
ये भी हम लिखेंगे न्यू इक्वल टू v by lambda, v by lambda, sorry, v by lambda. Velocity, frequency remain the same. These two changes, these two, if v increases, wavelength decreases, u remain as the same, Similarly, if v increases, this decreases, nu remain as the same, nu, that is frequency remain as the same. So first law is whenever light goes from one medium to another, frequency of light does not change, however the velocity and wavelength of light changes. This is the first law. Second law is जो हमने reflection में पढ़ा था, incident ray. This is the, suppose this is the normal, this is the incident ray, it falls on the interface which separates the medium 1 to medium 2 here, and this it bends light when it enters the medium 2 at the interface of this medium 1 and medium 2. This is incident ray, this is refracted ray, this is angle of incidence, and this is angle of refraction. So angle of incidence, this incident ray, refracted ray, and normal at the point of incidence, all lie in the same plane. Suppose this is the plane board and they lie in the same plane. So this is the second law. Incident ray AO, refracted ray OB, normal NO N dash, they all lie in the same plane. This is the second law. Third law is, हमें पता है जो अगर ये मीडियम 1 होगा, मीडियम 1 ये आयर, सपोज आयर होगा, वाटर होगा, क्या कुछ भी होगा, इसका रेफरेंस इंडेक्स इज ऑलवेज सेम. रेफरेंस इंडेक्स आयर इज 1.003, दैट इज इक्वल टू 1, ऑलवेज 1. रेफरेंस इंडेक्स ऑफ गिलास इज 1.5, ऑलवेज 1.5. रेफरेंस इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, दैट इज ऑलवेज 3. अगर हम ये यहाँ लेंगे, रेफरेंस इंडेक्स जो इस मीडियम का ऑलवेज सेम होगा, सपोज आयर ऑलवेज सेम, इट डज नॉट चेंज. रेफरेंस इंडेक्स दिस इज द मीडियम 1 का, ठीक. इसी तरह जो यहाँ जो एंगल बनेगा, ये सपोज 30 है, इस साइन 30 इज ऑलवेज 1/2. अगर हम प्रोडक्ट लेंगे, दिस इसका रेफरेंस इंडेक्स एंड द साइन ऑफ एंगल, रेफरेंस इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम 1 एंड साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि म्यू भी कांस्टेंट. इसका म्यू सपोज आयर का है 1, फ्री स्पेस का 1, वैक्यूम का 1, वाटर का 1.5, दैट इज ऑलवेज सेम फॉर पर्टिकुलर मीडियम. सो साइन अप अगर ये 30 होगा, इसका भी वैल्यू सेम है, 45 होगा, इसका भी वैल्यू सेम है. सो इसका प्रोडक्ट हम लेंगे, ये भी सेम बनेगा, दैट इज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक. अगर हम ऐसे लिखेंगे, अगर मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, सपोज दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, अगर हम यही एक्सटेंड करेंगे, इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, म्यू 1, इसका म्यू 1, इसका म्यू 1 साइन I1 इक्वल टू कांस्टेंट. सपोज ये वो I1 है, इसको मीडियम 1 का इंसिडेंस I1 है. सिमिलरली म्यू 2, अगर म्यू 2 ये लिखेंगे हम यहाँ साइन ऑफ I2, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट. मगर हमें पता है I1 जो है दिस I के बराबर है, I2 जो मीडियम इसमें R है, सो I1 इज I2 इज R. सो अगर हम यहाँ इसमें लिखेंगे, यहाँ म्यू 1 साइन I equal to constant, it means they are equal mu 2 sin R. So अगर हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे हम उनको करेंगे, mu 1 डिवाइड बाई mu 2, इसको हम अरेंज करेंगे, sin I, इसको हम डिवाइड करेंगे sin R, ये क्या इसके बराबर आएगा, mu 1, इसमें क्या डिवाइड होगा, mu 2 डिवाइड बाई mu 1, दैट इज mu 2 और mu 1 इज different index of 2 with respect to 1. So sin I divided by sin R किसके बराबर आता है, sin I divided by sin R, ये आता है mu 2 1, यानी different index of 2 with respect to 1. This is actually second law of motion, second law of refraction, that is it is also called Snell's law of refraction. It was discovered by Snell experimentally in 1621, and it is named after him, Snell's law of refraction. That is, it states that a ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for the light of given color, and for the light of given color, and for the pair of media in contact.
So this constant is called refractive index, medium 2 with respect to 1. Medium 2 means in which the refracted ray lies. Medium 1 means in which the incident ray lies. So this is Snell's law of refraction. So these are the three laws. One law is whenever light goes from one medium to another, speed of light changes, value of light changes, but frequency of light does not change. Second law is angle of incident angle, refract angle, and normally at the point of incident all are the same plane. Third law is ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant for the given media and for the given color for the light of given color. And this is about these laws of refraction.